हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टूडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ द लास्ट लेसन। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए इसे शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आप भी पढ़िए और समझिए, और आगे चल के हम बोर्ड्स के क्वेश्चन भी करेंगे इसी में, क्वेश्चन आंसर्स में एनसीईआरटी क्वेश्चंस और बोर्ड के अलग से क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेंड है वो लड़का है, कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. The narrator of the story is a young boy. जो narrator है स्टोरी का वो एक young boy है जिसका नाम फ्रेंच है, and वो मॉर्निंग में बहुत डरा सा है बिकॉज क्योंकि वो लेट है स्कूल के लिए, और इसलिए भी क्योंकि जो मिस्टर हेमल है उन्होंने कहा था कि पिछले दिन कल कहा था कि वो टेस्ट करेंगे आज पार्टिसिपेल का, वो टेस्ट लेंगे आज पार्टिसिपेल का, एंड फ्रेंड्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट देम, एंड इसी कारण से वो डरा हुआ है क्योंकि उसे आज डांट पड़ेगी या मारा जाएगा। तो फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। इट वाज सो warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the wood, and in open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling. तो एक मोमेंट के लिए फ्रेंड्स सोचता है कि वो भाग जाए यहाँ से, एंड क्या करे वो अपना सारा, चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स हैड अनदर ऑप्शन इन हिज माइंड। फ्रेंड्स के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था कि स्कूल को छोड़ दे और आज का दिन पूरा एंजॉय करे। कहाँ पे? क्योंकि आज का मौसम भी गर्म है और एक ब्राइट वेदर है, एंड वो डिस्क्राइब करता है सी कि देयर वर बर्ड्स chirping on the tree, and the noise of Persian soldiers doing the drill behind the sawmills could be also heard. Sawmills मतलब होता है फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड, एंड ड्रिलिंग मतलब होता है एक्सरसाइजिंग। तो जो sawmills के पास जो सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule of participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. मतलब क्या था कि the scene outside was more attractive than the school, but could French control the temptation and choose to attend school. जो सीन था बाहर का वो बहुत अट्रैक्टिंग था। वो फ्रेंच को मन कर रहा था कि आज वो स्कूल मत जाए, पर वो उसने अपने अट्रैक्शन को कंट्रोल किया, अपने विल पावर को कंट्रोल किया, और वो स्कूल की तरफ चल पड़ा क्योंकि स्कूल जाना ज़्यादा ज़रूरी था बजाय बाहर घूमने के। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battle, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? Bulletin board वो एक नोटिस बोर्ड होता है फॉर पुटिंग अप द लेटेस्ट न्यूज एंड कम्युनिकेशन के लिए। एज फ्रेंच वॉक पास द टाउन, जैसे कि फ्रेंच टाउन हॉल से गुजर रहा था, उसने नोटिस किया एक बहुत सारी भीड़ लगी हुई नोटिस बोर्ड के पास, क्योंकि ये वही नोटिस बोर्ड है जब प्रूशिया के साथ वॉर होता है। ये नोटिस बोर्ड का सिलसिला कब से बिगिन होता है? जब वॉर विद प्रूशिया के साथ जब वॉर होता है 2.5 ईयर पहले, एंड सिंस देन सारी की सारी बुरी खबरें वहीं से आती हैं। युद्ध का हारना, occupation of Alas and Lawrence by enemy, and that is Prussia. Enemy कौन है? Prussia, etc. had been communicated to the people through this bulletin board. French kept on walking towards the school and thought in his mind that what news could have been put up at the board now. Then, as I hurried as fast as I could go, the blacksmith watched it, who was there with apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me, and reached reached Mr. Hamel's little garden all out of breath. As he as he walked hurriedly towards the school, the blacksmith, who was also reading the news and had come along with plenty of training, called out to French from behind. जैसे कि वो बहुत तेजी से जा रहा था स्कूल, तो ब्लैकस्मिथ जो था वो पढ़ रहा था वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे। उसने देखा कि फ्रेंच बहुत तेजी से जा रहा है। उसने फ्रेंच को कहा कि बेटा इतनी तेजी से मत जाओ तुम, क्योंकि इतनी तेजी से तुम मत जाओ क्योंकि तुम स्कूल टाइम पे पहुँच जाओगे। फ्रेंच ने सोचा कि वो मजाक बना रहा है उसका,
और फ्रेंड इतनी तेजी से पहुंचा कि वो जब वो स्कूल के गार्डन तक पहुंच गया तो उसके पास तब उसने जाके अपनी सांस ली. He was out of breath and as he had walked very fast. वो सांस हाँफने लगा था जब वो अपने स्कूल के गार्डन तक पहुंचा. Usually when school began, there was a great rustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ear to understand better, and the teacher, great ruler, rapping on the table. A great whistle, matlab a loud noise created, a lot of noise created by many people. In unison, matlab at the same time. Rapping, matlab striking. ठीक है. तो फ्रेंच डिस्क्राइब्स द यूजुअल सीन एट द स्कूल इन द मॉर्निंग. फ्रेंड्स ने यूजुअल सीन बताया कि मॉर्निंग में कुछ बहुत सारी आवाज़ें आती हैं. मॉर्निंग में डेस्क की आवाज़ें आती हैं, चिल्ड्रन रिपीट करते हैं देयर लेसन एंड टीचर स्ट्राइकिंग द टेबल्स विद द रूलर्स. वो अपने स्केल से या फिर किसी लोहे से मारते रहते हैं टेबल पे. तो कुड बी हर्ड, बहुत सारा साउंड आता है. बट इस समय ऐसा कुछ नहीं था. बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, बहुत शांत था. एंड आई हैड काउंटेड ऑन द commotion टू गेट टू माई डेस्क without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. But the day was unusual. आज का दिन कुछ अलग ही था. Counted on मतलब depended upon, और commotion मतलब होता है noise and confusion. That day was unusual as there was no such sound coming out of the school, and it seemed that the school was closed as it used to be on Sunday morning. Friends had planned that he would take cover under the commotion and reach the class without being noticed, but that did not seem possible. फ्रेंड्स ने प्लान किया हुआ था कि वो इसी कमोशन का फायदा उठाएगा, नॉइज एंड कंफ्यूजन का फायदा उठाएगा और क्लास में छुप के पहुंच जाएगा, और ताकि कोई उसे देखे ना और अपनी सीट पे जाके बैठ जाएगा. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. Through the window, I saw my classmates already in their places, and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Friends prepared for friends friends ने देखा inside the class and saw his classmates seated, and Mr. Hamel, their teacher, walking in the class with ruler made of iron placed under his arm. Mr. Hamel आ रहे थे उधर से अपने रूलर के साथ, और फ्रेंड्स ने जैसे अपने क्लास में देखा कि सारे बच्चे सही जगह बैठे हुए हैं, तो फ्रेंच अब डरने लगा था. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. French was ashamed of being late. French शर्मिंदा था लेट होने के कारण, और वो उसे डर लगा था क्योंकि and feared a scolding that he would had to enter the classroom in front of everyone. उसे डर लगा था और जानता था कि उसे डांट पड़ेगी क्योंकि वो लेट आया है सबके सामने. But nothing happened. Mr. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friend. We were beginning without you." Friends found it strange. Friends को ये अजीब लगा कि मिस्टर हेमिल ने आज से कुछ नहीं कहा. On the contrary, and उसके अलावा और उन्होंने प्यार से बोला उसे कि बेटा तुम अपनी सीट पे जाओ, and without क्योंकि और उससे कहा कि हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे. ठीक है. I jumped over the bench and sat at my desk. Now, not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and then little black silk cap, all embroidered, that he never wore except in inspection. So friends hurried to his seat. Sometime देखिए फ्रेंड बहुत तेजी से भागा अपनी सीट की तरफ. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद उसने नोटिस किया एंड ही ओवरकेम दिस स्केयर. और कुछ देर बाद जब वो अपने डर से बाहर निकला और कंफर्टेबली बैठा अपनी जगह पे, तो उसने नोटिस किया कि उसके टीचर ने आज पूरा एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा पहना हुआ है, एक ब्लैक कैप लगाई हुई है सिल्क की, और टीचर नॉर्मली और ऐसा कपड़ा टीचर नॉर्मली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे के दिन या फिर इंस्पेक्शन के दिन पहनते हैं. फ्रेंड्स वंडर्ड if that day was a normal day, then what could be the reason for Mr. Hamel to wear this? फ्रेंड्स ने सोचा आज तो नॉर्मल डे है, क्या रीजन हो सकता है मिस्टर हेमिल का ऐसे कपड़े पहन के आना. Besides, the whole class seemed to be strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the black benches, on the back benches that were always empty. The village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and the several other besides. Friend, सोल में मतलब तो सब है serious.
द फ्रेंच फेल्ट एटमॉस्फेयर, फ्रेंच ने देखा कि एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस है और कुछ सीरियस है स्कूल का एटमॉस्फेयर टू ऐड टू इट। और इसके अलावा उसने देखा कि लास्ट बेंच पे क्लासरूम की जो सीटें हैं वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई कर दी गई। उस पर कौन बैठा हुआ है, सीनियर बिलीजमैन हाउसर बैठा हुआ है, हु इज वेयरिंग अ थ्री कॉर्नर्ड हैट। और रिटायर्ड मेयर बैठे हुए हैं और पोस्ट मास्टर बैठे हैं और भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। एवरीबडी looked sad and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges and he had held it open on his knee with his great specs lying across the pages. प्राइमर मतलब होता है बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, थर्म मतलब होता है टॉन एंड डैमेज। दे ऑल लुक्ड सैड। हाउजर हैड ब्रॉट हिज रीडर व्हिच वाज ओल्ड एंड टॉर्न। ही हैड ओपनड इट, kept it on his knee and had placed it has placed his specs on it. Basically क्या हुआ था कि all were looking sad और जो हाउजर था has brought his reader which was old and torn। उसने अपना रीडर लाया था जो कि ओल्ड और टॉन था, फटी हुई थी। एंड ही हैड ओपनड इट, और उसे खोला और उसके बाद उसे अपने घुटनों पे रखा और एंड हैड प्लेस्ड हिज स्पेक्स ऑन इट, और उस पे अपना चश्मा रखा। व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मिस Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in school of Alas and Lauren. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. French lesson. I want you to be very attentive." Gray मतलब serious. French was confused and could not figure out the what was happening that day. French was confused और कुछ जान नहीं पा रहा था कि आज हो क्या रहा है। Just then, Mr. Hamill ने बताया कि ये उनका लास्ट लेसन है, ये उनका आखिरी लेसन होने जा रहा है फ्रेंच का, क्योंकि प्रूशियन गवर्नमेंट ने कहा है, जो कि बर्लिन में उन्होंने ऑर्डर किया है कि फ्रेंच लैंग्वेज को अब नहीं पढ़ाया जाएगा उनके स्कूल में, अलास और लॉरेन के रीजन में, एंड द जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट। और जर्मन टीचर कल से आ जाएंगे और इसीलिए अब मिस्टर हेमिल डिपार्ट करेंगे, निकलेंगे बाहर। ही वांटेड देम टू पे अटेंशन, और मिस्टर हेमिल चाह रहे थे कि उनका आखिरी लेसन है तो वो सब लोग उन्हें अटेंशन दें, उन पे अटेंशन, सही से सुने। What a thunderclap these words were to me! Oh, the riches! That was what they had put up at the town hall. So, thunderclap मतलब used in comparison to refer something startling or unexpected. Riches मतलब here it refers to unfortunate happening. What an unfortunate thing happened. French was shocked to know that he could not learn French any longer. फ्रेंच को अचानक से शॉक लगा कि अब वो फ्रेंच तो लर्न ही नहीं कर सकता। एंड नाउ ही न्यू द लेटेस्ट न्यूज दैट ही हैड बीन पुट एट द बुलेटिन बोर्ड, और अब उसे समझ में आया जो बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज़ लगी हुई थी वो क्या न्यूज़ थी। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, sorry. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeing bird's egg or going sliding on the Saar. Saar is a river that is passing from the France. फ्रेंड्स regretted for फ्रेंड्स दुखी था कि उसने क्यों नहीं सीरियस अटेंशन दिया टुवर्ड्स अपनी पढ़ाई के लेके, एंड उसने टाइम बर्बाद किया अपना चिड़ियों के अंडे को फोड़ते हुए और सार नदी के किनारे खेलते हुए। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sense, were old friend now that I couldn't give up. Nuisance problem, could not give up मतलब could not leave, cannot leave. Till now friends consider, अब तक फ्रेंड्स कंसिडर करता था अपने बुक को एक अनवांटेड बर्डन, बट अब उसने रियलाइज किया और उसने स्टार्ट किया, बट ही स्टार्ट कंसिडरिंग, अब उसने अपने बुक्स को अपना दोस्त मानना समझना चालू कर दिया, और उसने सोचा कि अब तो वो बुक्स को कभी छोड़ ही नहीं सकता। द राइटर वांट्स टू show that the change in French attitude towards the study after hearing the news that he could not learn French no longer। यहाँ राइटर ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो एटीट्यूड में चेंज आया फ्रेंच के, कि अब उसे बुक्स तो कभी छोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि वो फ्रेंच अब नहीं सीख सकता है क्योंकि उसके मास्टर डिपार्ट करने वाले हैं। एंड मिस्टर हैमिल टू the idea that he was going away, that I should never see him again,
made me forget all about his ruler and how cranky he was. How cranky मतलब strange and short tempered. तो न्यूज़ दैट और ये न्यूज़ भी उसे तंग कर रही थी, दुखी कर रही थी कि जो मिस्टर हैमिल लीव करने वाले हैं उसका एक सिमिलर इम्पैक्ट उसके चेहरे पे पड़ रहा था, उसके दिमाग में पड़ रहा था. एंड फ्रैंक डिड नॉट वांट टू गो हिम अवे, एंड फ्रैंक डिड नॉट वांट him to go away. Frank नहीं चाहता था कि मिस्टर हेमिल जाए यहाँ से. He no longer thought the teacher to be short tempered and strict. और उसने अब वो ये सारी बातें छोड़ दिया था अपने दिमाग से कि अब टीचर उसे डांटेंगे या मारेंगे या टीचर गुस्से गुस्से वाले हैं. सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दिया था. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. फ्रैंक को अब समझ में आया कि मिस्टर हैमिल ने अपने कपड़े क्यों पहने हैं, अपने अपने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं, और जो बूढ़े लोग हैं विलेज के वो पीछे क्यों बैठे हुए हैं. It was because they were sorry. They were sorry to they that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. The village जो गांव के लोग थे had come to the classes as they were also repenting. उन्होंने अपना थैंकफुलनेस दिखाया था लोगों के साथ. एक सेकंड. Now, frankly, sorry, it was because they were sorry to that they had not gone to school more, and it was a way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect of the country that was there no more. जो विलेजमैन थे उन्होंने अपना ये थैंक करने का जरिए दिखाया क्योंकि वो क्लास में आए और मास्टर की 40 ईयर की सर्विस के प्रति उन्होंने अपना डिवोशन दिखाया. एंड दे आल्सो वांटेड टू शो रिस्पेक्ट टू द कंट्री एंड वाज सैड एज देयर मदर लैंग्वेज फ्रेंच वुड नॉट बी नो लॉन्गर बी टॉट टू देम. और वो दुखी थे कि उनकी मातृभाषा फ्रेंच को अब उन्हें नहीं पढ़ाया जाएगा. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब तक मैं ये सब सोच रहा था, फ्रेंच में सोच रहा था, तब फ्रेंच का नाम बुलाया गया. It was my turn to recite. मेरा टर्न था पढ़ने का. What would I not have been given to able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake. Dreadful of the frightening. As the news had impacted French, he was eager to study, and so he was desperate to show his eagerness. He wanted to be able to recite the topic in one go and without any mistake, and please his teacher. His desperations is reflected in his willingness to give away all that he had in return for reciting the lesson well. But I got mixed upon the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look. Mixed up. But जो फ्रेंच था वो कंफ्यूज हो गया और उसका हार्ट बीट करने लगा बहुत तेजी से और एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. वो ऊपर देख नहीं पा रहा था. एज फ्रेंड्स डिड नॉट नो द लेसन, जैसे कि फ्रेंड्स को लेसन पता ही नहीं था, वो कंफ्यूज हुआ और स्टूड क्वाइटली, और वो खड़ा ही रहा वहाँ पे. His heart was beating fast as he was ashamed of himself and did not have courage to face his teacher. उसका हार्ट बीट कर रहा था और वो नीचे ही देख रहा था क्योंकि उसके पास करेज नहीं थी, उसके पास ताकत नहीं थी कि वो अपने टीचर को देख सके. I heard Mr. Hamel say to me, I want to scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, wow, I have plenty time. I will learn it tomorrow. And now you see we have come out. Mr. Hamel ने कहा, where we have come out of the result. Mr. Hamel ने जब फ्रेंड्स को कहा, said to friends that he would not scold him. वो आज फ्रेंड्स को वो मारेंगे नहीं या फिर स्कोल्ड नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं. As now he had realized his mistake. वो समझ गए कि आज फ्रेंड ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर लिया. एवरी डे फ्रेंड उन्हें कहता था कि ही वुड स्टडी द नेक्स्ट डे, वो कल से पढ़ेगा. एंड नाउ द अपॉर्चुनिटी, आज वो दिन आ गया टू स्टडी, एंड नाउ द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी हैज एंडेड. और आज वो दिन आ गया जब पढ़ाई वो कर ही नहीं सकता है. एंड ही न्यू नथिंग, क्योंकि आज के बाद फ्रेंच के टीचर नहीं रहेंगे तो अब वो कैसे पढ़ेगा फ्रेंच.
और he knew nothing और उसे अभी तक कुछ नहीं पता था. That's a great trouble with the alas. She puts off leaving tomorrow. Now those fellows out there out there will have right to say you how it is you pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak or nor write in your language. But you are not the worst. Poor little French, we have all a great deal to reapproach ourselves with. Pretend to show to reproach the blame. Mr. Hamel says that the people of Alas were to be blamed as no one was serious toward learning French. इसके लिए पूरे सारे लोग एलास के जिम्मेदार हैं क्योंकि किसी ने भी इतनी सीरियस नहीं दिखाई कि वो फ्रेंच या पढ़े और लिखे. ही टेल्स द क्लास दैट द एनिमीज जो उनके दुश्मन है प्रुशियन है वो उन पे हंसेंगे क्योंकि एक तो एलास और लॉरेंस के रीजन के लोग अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हैं वेरएस उन्हें ना फ्रेंच में लिखना आता है ना पढ़ना आता है ना बोलना आता है. सो एंड इसीलिए उनके enemies हंसेंगे उन पे would laugh at them and say that they only show to be a Frenchman as they can neither speak nor write in their own language. He says that French should not feel guilty as everyone is at fault. उन्होंने कहा कि फ्रेंच तुम खाली तो अपने आप को दुखी मत करो क्योंकि ये सबकी गलती है. Your parents were not anxious. Your parents were not worried enough to have you learn. They preferred you to put to work on farm or at minis. So as to have a little money, and I have been to be blamed also. Have I often have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go to fishing, did I not just give you a holiday? Mr. Hamel says that French parents were not interested in getting him educated. Mr. Hamel कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो. दे वांटेड तो वो चाहते थे कि तुम वर्क करो एक फार्म में और एक मिल में ताकि तुम कुछ पैसे भी कमा सको. और वो ही सेज दैट एज अ टीचर और उन्होंने कहा कि एज अ टीचर मैं भी नहीं शायद इसमें मेरी भी गलती है. ही वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग देम और वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे वो भी उत्साहित नहीं थे इन्हें सबको पढ़ाने के लिए आप सबको पढ़ाने के लिए. ही वुड सेंड देम टू हिज होम टू वाटर द प्लांट और वो इन सभी उनको फ्रेंड्स को भेज देते थे पानी डालने के लिए उनके पौधों को. और समटाइम जब उनका फिशिंग करने का मन करता था तो वो छुट्टी करवा देते थे. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल went on talk of French language, saying that it was most beautiful language in the world, the clearest, most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a person are enslaved, as long as they hold fast to their language as it is, as if they had the key to their prison. मिस्टर हैमल ने अपनी लैंग्वेज के बारे में प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि उनकी मातृभाषा जो फ्रेंच है वो एक बहुत ही सुंदर एक साफ़ सुथरी और एक बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है. ही टेल्स द क्लास टू गार्ड उन्होंने क्लास को बताया कि अपनी लैंग्वेज की अपनी मातृभाषा की सुरक्षा करने की ज़रूरत है एज इट इज़ द ओनली वे टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द प्रिजन ऑफ स्लेवरी. और ये यही एक रास्ता है जिससे वो इस गुलामी से बाहर आएंगे. इफ़ अ पर्सन नोज हिज मदर टंग वेल अगर कोई भी पर्सन अपनी मातृभाषा को अच्छी तरीके से जानता है देन कोई भी आदमी उसे गुलाम नहीं बना सकता है. नोइंग मातृभाषा अगर आप मातृभाषा को अच्छी तरीके से जानते हैं तो वो आपके लिए एक टूल की तरीके काम करेंगी ताकि आप डोमिनेंस के खिलाफ फाइट कर सकें. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस our lesson. I was amazed to see that. I was excited to see that how well I understood it. All he said seemed so easy, seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke. At one stroke means at once. So the teacher took a lesson in grammar. जो टीचर मिस्टर हैमिल थे उन्होंने लेसन लिया ग्रामर में. दैट डे फ्रेंच वो सरप्राइज और फ्रेंच जो था वो सरप्राइज था. दैट ही अंडरस्टूड द लेसन विद ईज बहुत आसानी से वो लेसन समझ गया. ही फेल्ट दैट ही हैड बीन अटेंटिव एंड दैट मिस्टर हैमिल ऑल्सो एक्सप्लेन द लेसन विद लॉट ऑफ पेशेंस. उन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ धैर्यता के साथ लेसन को पढ़ाया. फ्रेंड्स फेल्ट दैट द teacher wanted to give them all the knowledge he could give before leaving. फ्रेंड ने
ऐसा महसूस किया कि टीचर चाहते थे कि सारे का सारा जितना भी नॉलेज है वो सारा का सारा आज दे ही दे बिफोर उनके जाने से पहले. After the grammar, he had a lesson in writing. That day, Mr. Hamill had copies for us, written in beautiful round hand, France alas, France alas. After ग्रामर के बाद उन्होंने एक लेसन राइटिंग दी, हैड अ लेसन इन राइटिंग. मिस्टर हैमिल गेव द क्लास न्यू नोटबुक्स with France alas beautifully written on them. फिर they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of pen over the papers. Friends felt that here was an air of patriotism in the class. The notebook were like the flag of France that were floating all around. The जो नोटबुक थे वो फ्रांस के झंडे की तरीके थे, वो पूरी जगह फ्लोट कर रहे थे. वो the entire class was busy in writing and the only sound that could be heard was that of pen writing on the paper. पूरी क्लास बिजी थी राइटिंग करने में, लिखने में बिजी थी, और जो साउंड एक खाली सुनाई दे रही थी वो थी पेन के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी. While some beetle flew in, but nobody paid attention to them, not even the littlest one, who worked right on the tracing their fish hook as if that was French too. Beetles or lost sight insect पता है. Not even the littlest one मतलब होता है कि refers to penguins and refers to peasant, sorry, कबूतर, who worked right on tracing their fish hook मतलब scratching with their claws, पंजे से scratch करना. Once some mosquito flew into the class, but no one panicked as everyone was busy. सब लोग busy थे वहाँ पे. The writer considered the person sitting on the roof of the class to be the student as well. जो pigeon जो था, वो जो कबूतर जो था, जो क्लास के बाहर बैठा हुआ था, रूफ पे बैठा हुआ था, छत पे बैठा हुआ था, वो भी एक स्टूडेंट की तरीके ही वहाँ पे शांति से बैठा हुआ था. And that even the penguins were busy scratching the roof. और जो पेंगुइन सॉरी बाहर पिजन की कबूतर भी बिजी थे वो रूफ को स्क्रैच करने में with their claws और खुद के पंजों से. And it seemed that they were also busy writing the task of French language. Then on the roof the pigeons cooed low, very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeon. Coo मतलब making the sound made by the pigeon. The coo sound of the pigeon could be heard in the class, and the जो कू साउंड जो आवाज़ आ रही थी कबूतरों की वो क्लास में सुनाई दे रही थी. एंड फ्रेंड्स ने सोचा कि क्या पर्शियन कबूतरों को भी फोर्स कर रहे हैं, क्या वो जर्मन लैंग्वेज में ही गाएं या बोले. द राइटर वांट्स टू से दैट द लैंग्वेज कम्स नेचुरली. जो लैंग्वेज है वो नेचुरली आती है टू अ बीइंग. किसी को भी लैंग्वेज नेचुरली आती है एंड इट कैन नॉट बी फोर्स अपॉन देम. उन पर डाला नहीं जा सकता, प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि वो लैंग्वेज यही लैंग्वेज बोले, बी इट पिजन और बी इट फ्रेंचमैन, चाहे वो कबूतर हो चाहे वो फ्रेंच के लोग हों. तो व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने अपनी राइटिंग खत्म करने के बाद मैंने ऊपर देखा, आई सॉ मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड grazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Reason the looking intentionally or fixing his mind, the store or keep forever. In between writing, Frank looked at Mr. Hamill. Frank ने Mr. Hamill को देखा, who was सिटिंग स्टिल, शांति से बैठे हुए थे और वो सारी चीज़ की तरफ अपनी निगाहें देख रहे थे, सब चीज़ को नोटिस कर रहे थे और सब चीज़ को रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जब यहाँ से जाएं तो वो सारी यादें उनके दिमाग में स्टोर रहे, क्योंकि उन्होंने 40 years के लिए पढ़ाया है. Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twinned out the windows to the roof. Worn smooth मतलब had worn out and become smooth due to overuse. Twinned मतलब twisted. Mr. Hamill had been teaching at that same place for last 40 years. The only change were that in the desk the desk in the classroom had worn out due to the use over the years. जो change जो खाली महसूस किया उन्होंने कि जो डेस्क जो थी, जो टेबल थी, वो
वो वॉर्न आउट हो चुकी है सालों को साल यूज होने के बाद। जो वॉलेट ट्री है इन द गार्डन है वो ज़्यादा लंबा हो गया है, जो वो फाइन आउटर वॉल ऑफ द स्कूल बिल्डिंग है वो रूफ तक पहुंच गया है। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. Frank feels that the teacher must be heartbroken to send. फ्रेंक सोचता है कि उसके टीचर का हार्ट जरूर उसका दिल टूट गया होगा जब वो अपना टू बी सेंट अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर ही, क्योंकि वो जगह छोड़ने वाले हैं जहाँ पे उन्होंने अपने 40 साल गुजारे थे। उस उनके सिस्टर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है जो उनका सामान पैक कर रही है और लगेज पैक कर रही है जो कि ऊपर वाले रूम में है, एज दे हैड टू लीव द नेक्स्ट डे, और एज क्योंकि उन्हें अगले ही दिन लीव करना है। बट ही हैड the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, he had a lesson in history, and then the babies chanted their ba bee bee boo bee. So Mr. Hamel remained composed and heard the lesson from entire class. पूरी क्लास से उन्होंने लेसन सुना। आफ्टर द राइटिंग टास्क देयर वाज अ लेसन ऑफ हिस्ट्री। लिखने के बाद वहाँ पे एक लेसन का हिस्ट्री का था, फॉलोड बाय फोनोटिक्स वेयर दे रिसाइटेड द साउंड ऑफ अल्फाबेट। फ्रेंड्स referred to the class as babies. फ्रेंड्स ने रेफर किया पूरी क्लास को एज अ बेबी बिकॉज ऑल दो दे वर ग्रोन अप, क्योंकि वो बड़े हो गए थे तभी वो लेसन्स फोनोटिक्स के लेसन्स ले रहे थे, विच इज़ यूजली डन बाय यंगर चिल्ड्रन, जो कि छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है। सो ही कॉल हिमसेल्फ एंड हिज क्लास टू बी बेबीज। सो down there at the back of the room, old Hauser had put on his specs and holding his primer in both hands, spelled the letter with them. You could see that you could see that he too was crying. His voice trembled, थरथराना trembled मतलब थरथराना, with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. Hauser had put on his specs. Hauser अपना specs लगा लेता है and holding his primer in both hand, रीडर को दोनों हाथों में पकड़ते हुए and recited the letter with the class. He was crying. His voice trembled with thirtarana as he spoke. Thirtarana tha Hauser. Frank had mixed feeling. He found it funny to see how an old man like Hauser was crying. फ्रैंक के दिमाग में एक मिक्स फीलिंग आ रही थी, एक फनी फीलिंग भी आ रही थी, एक इमोशनल फीलिंग भी आ रही थी कि एक हाउसर जैसा बूढ़ा आदमी रो रहा है and trembling और थरथरा रहा है, and on the other hand he also felt emotional like Hauser did. Friends could never forget his last lesson. All at once the church clock 12. The church clock struck 12. Then the Angelus. Angelus मतलब prayer song in the church started. तो prayer song church का start हो गया था. तो just then the clock जो church का था वो 12 बज गया और जो prayer था वो चालू हो गई. At the same moment the trumpet of the Persian returning from the drill sounded under the windows. Mr. Hamill stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. Trumpet एक instrument है. Musical instrument पे मतलब used to describe a person face or a skin which has less color than usual. At the same time जो sound of the trumpet play किया गया Persian soldier द्वारा, who were returning from the drill was heard. Mr. Hamill जो कि डल फेस के थे, डल फेस उनका फेस डल हो गया था और कलरलेस हो गया था उसी समय as the time had come for the class to get over. क्योंकि टाइम आ गया था, समय आ गया था क्लास का खत्म होने का. स्टूड स्ट्रेट एंड मोशनलेस. वो सीधे खड़े रहे और हिले मतलब हिल नहीं रहे थे एकदम. एंड फ्रैंक जो था उसने पहली बार देखा था कि वो इतने लंबे हैं. हैज़ नेवर अपीयर्ड. फ्रैंक सेज दैट ही हैड नेवर अपीयर्ड सो शॉर्ट. वो आज बहुत लंबे दिखाई दे रहे थे. माय फ्रेंड्स सेड ही डैश 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 बट समथिंग शॉक्ड हिम. आगे उन्होंने कुछ बोला नहीं. माई फ्रेंड्स जैसे ही उन्होंने बोला ही सेड, आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि जो इमोशन उनके अंदर भरा हुआ था वो उन्हें रोक रहा था कुछ भी बोलने से. ही कुड नॉट गो ऑन. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ chalk and being on with it, he smiled. He wrote as large as could be possible, Viva le France. Showed मतलब unable to speak due to strong emotions. हैमिल ने क्या किया, बिगिन टू स्पीक. हैमिल बोले जा रहे थे लेकिन उनका इमोशन, उनके अंदर इतना इमोशन भरा था, स्ट्रॉन्ग इमोशन. 40 साल की उनकी नौकरी का जो इमोशन भरा था आज लास्ट से था, वो उन्हें बोलने से रोक दिया. और उन्होंने एक चॉक उठाया और एक जितना लंबा लिख सकते थे उन्होंने लिखा
Viva la France, meaning long live France, on the blackboard as large as he could. Then he stopped and leaned his head against the wall, and with a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और उन्होंने जब और रुके वो रुके और अपना सर को वॉल के सारे उन्होंने रोका, पीछे रखा, एंड और उन्होंने एंड विदाउट अ वर्ड उन्होंने एक भी वर्ड बिना बोले एक जेस्चर दिया कि तुम लोग अब जा सकते हो, स्कूल अब ख़त्म हुआ. फिर देन ही वो तो खत्म हो गया. क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम. व्हाट shows you this. What does this happen? तो यहाँ आप समझ सकते हैं when the village man realizes that their mother language, when the village man realize that their mother language French will no longer be taught to them, they realizes its importance. Suddenly जब इंसान के पास कोई चीज़ होती नहीं है ना तो वो सबसे इम्पोर्टेंट लगती है. ठीक है, इसी प्रकार जब तक टीचर थे तो उन्हें फ्रेंच को मतलब मातृभाषा की इज्जत नहीं थी, पर जैसे ही टीचर जाने लगे तब उन्हें अपनी मातृभाषा की इज्जत समझ में आई. French was no longer to be taught to them. They realized its importance. Suddenly, they develop an inclination towards learning. They attended the last session of French, bring their old taunt primers to learn the language, which shows their eagerness. They regretted putting off learning French to the next day. Now, finally, the last lessons has arrived, and they cannot read their own language. They are ashamed of themselves and realize that Germans have overpowered them due to their lack of knowing their own language. Friends think, will they make them sing in German, even the peasants? What could this mean? A French is disheartened when he comes to know that is no longer he can no longer learn his language French. Their district has been captured by the Germany, and now German will taught to them. Friends feel that mother tongue comes to a person naturally, he is born with it, and no one can snatch it away. Just like pigeons make the coo sound irrespective of the country from which they are, similarly, human beings also communicate in their mother tongue. As the German are trying to impose their language on the French, so similarly, French feels that they will tease the peasant also to coo in German language. He has given this example to highlight his point that language is a natural mode of communication and it cannot be imposed. चलिए बोर्ड्स के क्वेश्चन पे आते हैं 2016 2012 से 2016. What changes did the order of Berlin cause in his school? The changes क्या आए थे कि the order from the Berlin director school in district of as Alas and Lawrence रीजन में कि जर्मन को पढ़ाया जाएगा इंस्टेड ऑफ फ्रेंच. तेरह का what did French react to the declaration that it was their last French lesson? French was shocked and sad when he heard this news. Suddenly, he developed a liking for his language and was keen to learn French. He was remorseful for not learning well in the past and was sad that his teacher, Mr. Hamel, would go away. Why were the elders of the village sitting in the classroom? The elder of the village came to the classroom to attend the last lesson of the French in the school as a mark of respect for the French teacher, Mr. Hamel, who had been teaching them for the last 40 years. These elders had not studied well and could not read and write in their own mother tongue, French, and French, and so it was the last opportunity for them. They came to attend the class. The order from the Berlin arose a particular zeal in the school. Comment. Answer the following question in 2021. और ये करिए या फिर our language is a part of our culture and we are proud of it. Describe how regretful Mr. Hamel and the village's elders are for having neglected their native language. So when Berlin ordered that French language would not be taught in a school in French districts of Alsace and Lawrence, it steered the otherwise lazy Frenchmen. Suddenly, they all had a strong desire to learn how to read and write their mother language. It was not only the children who went to school, but also the elders of the village who had not studied seriously in their childhood, putting off unimportant works to the next day. The day finally arrived as the last day of French language in the school. They become serious and keen to learn as they feel the German would laugh at them for not knowing their own language. They were ashamed of themselves when the teacher says that this lack of knowledge is the reason for their defeat to Germans and ask them to save their mother tongue as being close to one's language is the key to escape from the
प्रेजेंट टू स्लेवरी। तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं अपना चैनल, अपना वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। चलिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को।